Hello, how are you student? Fine? Okay. मैं सुहास पटेल स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 Heron's formula. Last time we learned about the formulas. Now we learn about next topics of examples. Here first we read the example after we solve. Find the area of the triangle whose two sides which are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter. See in the figure. यानी आपको फिगर दी हुई है तो फर्स्ट ड्रॉ द फिगर ओके आफ्टर वी सॉल्व. एग्जाम्पल 1 ABC. Here 11 centimeter is given, 8 centimeter also given, perimeter 32 centimeter given. Okay, find the area. So first this is the perimeter. Perimeter means here 2s is equal to 32. Okay, going this side s is equal to 32 by 2, 16. S is equal to 16. Okay, now we want to find out the BC. Here BC is not given, so find out first. So we know that perimeter S 2s, suppose 2s is equal to A plus B plus C. Here A opposite small a, find out, B opposite small b, C opposite small c. Okay, it means here A find out, B 8, C 11. Okay, put here 2s is equal to 32, A small a find out, B 8, C 11, 32, 19. 32 minus 19 is equal to A. Okay, subtraction. So 12, 2, 3, 1, 13 centimeter. Okay, this type A is the find out here. Okay, now we want to find area of triangle ABC. Okay, so this type, if a side is given and find the area, so we use the Heron's formula. Area of triangle ABC, this is the short form, okay, of area. Under root S minus A, S minus B, S minus C. Under root S is here 16. 16 minus A means 13. S 16, B small b 8,
16 minus C, 11. 16 minus 13, 3, 8, 5. Now here 8 to the 16. Here remaining 3, 8, 5. Here 8 square. 2 3 is 6, 6 5 is 30. So 8 root 30 centimeter square. Okay, this is the area of given triangles. Okay, now here second example is given. Here a triangular park, एक पार्क दिया है ट्राइंगल शेप का, उसका नेम दिया है ABC. ओके, द हैज साइड 120 सेंटीमीटर, एक साइड 120 सेंटीमीटर है. ड्रॉ कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा. एग्जाम्पल सेकेंड, ट्राइंगल टाइप्स ऑफ द पार्क. ए ट्राइंगल शेप का पार्क है ABC. दिस इज नेम इज गिवन हियर. ओके, सेकंड हियर हैज साइड 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50. ओके, 3 साइड्स. सी इन द फिगर, फिगर में दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं ये 120 मीटर है. ओके, फिर दूसरा यहाँ 50 मीटर दिया है और यहाँ 80 मीटर. Okay, now here a gardener Dhania has to put fence all around it. ओके, यानी यहाँ धानिया नाम का जो गार्डनर है वो यहाँ फेंसिंग करता है सब साइड्स. ओके, ऐसा दिया है. दूसरा इसमें दिया है all around it and also plants grass in it. और यहाँ उसने जो फेंसिंग किया है प्लांटिंग कर रहा है, यानी प्लांट्स, ट्रीज, ये सब ग्रो कर रहा है. दूसरा इसमें दिया है ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for that on sides. ओके, यानी इसने क्या बोला है, यहाँ 3 मीटर वाइड सब साइड, बराबर, ये सब साइड, ये जो है 3 मीटर वाइड उसका रास्ता बनाया है. उसके अंदर फेंसिंग करने उसने सारी साइड क्या ट्रीज, प्लांट सब ग्रो किया है. उसकी कॉस्ट दी है ₹20 पर मीटर, यानी 1 मीटर का 20 रुपीज देना पड़ेगा. ऐसा है. चलो पहले इसके अंदर फर्स्ट क्या है वो देख लेते हैं कि इसका पैरामीटर क्या है. ओके, तो पहले ले लेते हैं पैरामीटर. तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी. ओके, सो अपने जो पैरामीटर है उसकी फॉर्मूला है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. दिस इज द फॉर्मूला. पैरामीटर ढूंढना है. a क्या है, स्मॉल है 120, b क्या है 80, c क्या है 50. 0, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 1 carry, 1 2.
2s. S is equal to 250 upon 2 and 125. S is equal to 125 meter. Okay, this is the S. S means semi-perimeter. 2S means perimeter. Now here we want to find first area because area is not given here. Okay, so first find the area. Start now. So this sides is given, so we use area for triangle, use Heron's formula if side is given, so okay, because altitude is not given. So area of triangle ABC is under root S minus A, S minus B, S minus C. Under root S here 125, S minus A, so 125 minus A small a is 120, S 125, B small b 80, 125, small c 50, under root 125 minus here 125 minus 20 is 5. This subtraction 5, 12 minus 8 4, here 5, 12 minus 5 7. Okay, this is the subtraction. Now factorization 125. Okay, so we know that 5 5 is 25, 25 5 is 125. So 5 5 5, this 125 factorization 5, this 9 5 is 45, here 25 3 is 75. Okay, this is the factorization. Now we do square. This is the 5 square, this also 5 square. Okay, here 3 square, this is the 5 square, remaining 5 3 is 15, remaining this. Okay, so this square and square root are gone, so remaining part here 5 5 3 5 under root 15. 5 5 is 25, 25 3 is 75, 17 5 is 5 5 is 25, 2 carry, 5 7 is 35 plus 2 37, 3 7 5 root 15 here meter square. Why square? Because area is given here. Now this is first area find out. Now here perimeter is also not given. Okay, so what are you doing? Okay, first park perimeter is not given, so first find the perimeters. Here perimeter, okay, it means 2s is equal to, here 2s given 250 or 250 meter. This is the perimeter. Okay, perimeter, it means addition of the all sides. If we do here, so 250, right now 250 meters. Okay,
But here, okay, here length wire, here in the given the question of wire needed fencing, उसको fencing करनी है, कितनी 3 मीटर, ओके, यानी 3 मीटर ये चला जाएगा. और after we growing the trees, plants, so we given the costing of 20 rupees per meter, okay. So length wire जो है needed fencing वो लिख लेते हैं. हाँ, the length wire needed of fencing यानी अपने को टोटल 250 मीटर है, उसमें से 3 मीटर फेंसिंग के लिए चला जाता है, ओके. क्योंकि ये टोटल हुआ अपना, ये यहाँ से लेके यहाँ फेंसिंग कितना हुआ 250, और ये जो फेंसिंग है मैंने ड्रॉ आउट साइड किया है, पर वो इनर साइड है, यहाँ हुआ है. ये 3 मीटर जो आएगा वो चला जाएगा, बिकॉज इनर साइड फेंसिंग है, ओके. तो ये इसलिए माइनस किया, तो क्या आएगा 247 मीटर. हियर गिवन रुपीज ऑल्सो, 1 मीटर हैज 20 रुपीज गिवन. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो ढूंढना है, तो आंसर आएगा द cost of your fencing we want to need fencing. So total है here 247 meter multiply 20, okay, because here 247 meter perimeter given, because 3 meter inner side fencing है, यानी वो कट जाएगा, okay, इसलिए माइनस किया है यहाँ. और 1 meter has the 20 rupees given, so multiply. So rupees 0, 2 7 are 14, 1 carry, 2 4 are 8, 9, 2 2 are 4, 4940. This is the answer of example 2. Now we do example 3. First read the question, after we solve. The sides of triangular plots are in the ratio of 3m, 5m, 7, and its perimeter is 300 meter. Find the area. Okay, now we start example 3. Okay, this is a minus because inner side fencing, इसलिए. चलो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 3. Now we start example 3. Here triangular plots, so we draw triangular plot ABC. Here sides is given in 3m, 5m, 7. So suppose 3m, so 3x, AB is equal to 3x meter. Yes, this is given meter. 5m, so 5x, BC is equal to 5x meter. CA 7x, so CA is equal to 7x meter. Okay. Now here perimeter is given, so total
पेरीमीटर, हाँ, पेरीमीटर is given 300 मीटर, दिस गिवन। फाइंड एरिया, आपको एरिया ढूंढना है, ओके, ऐसा दिया है। तो फर्स्ट हियर पेरीमीटर फॉर्मूला 2s is equal to a plus b plus c. This is the formula. Here a opposite small a, it means this is the small a. B opposite small b, it means AC is equal to small b. C opposite small c, so this is the small c. Okay, so 2s 300, small a 5x, small b 7x, small c 3x. 300, 7 plus 3 10, 10 plus 5 15x. Okay, after x going this side, so 300 by 15, 15 to the 30, so 20 meter. Now find the ABC. So small a means 5x. 5x means here 20. 25 is 100 meter. Okay, here B, small b is equal to 7x. 7 into 20, 7 to the 40, 140 meter. Okay, small c is equal to 3x. So 3 into 20, 3 to the 6, 60 meter. Now find the area. Area of triangle ABC is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. Under root s here, find out first because 2s given. So 2s is equal to 300. S equal to 300 by 2. So 150. S is equal to 150 meter. Okay, because this s is not given, so here perimeter 2s is equal to 300 given, so 2s is equal to 300. 2 perimeter means 2s going this side, so 150. Put here 150 minus a, small a is equal to 100. 150 minus b, b means 140. 150 minus c, c means 60. Now here 150, 50, 10, 90. Okay, so now first taken here 15, 5 into 9, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, 0 वन साइड लिया है, बाकी का अंदर लिया है. Here 3 5s are 15, 5, 9. This is the 100 square. Okay. Now here 3, 5 square. This is the 9 means 3 square. This is the 100 square. Remove the square and square root. So 5 into 3 into 100 into root 3. 5 3s are 15, 2 0, root 3. Here meter is given, yes, so meter square. This is the answer. इस तरीके से ये एग्जाम्पल 1, 2, 3 फिनिश हो गया. बराबर, ये आपको मैंने बता दिया है.
ओके, ये आपको ध्यान से करना है तो इजी पड़ेगा, वरना हार्ड पड़ेगा। ओके, नमस्कार, बाय, सुबह।